Yes, students, we were discussing lastly the development of the main plot, and the main plot is the story between Elizabeth and Darcy. अब उनके घर में इकट्ठे हुए हैं सारे मिस्टर बिंगले के घर में। मुझे याद है आज आपका क्विज था नहीं बल्कि है, होगा इंशाल्लाह। हम थोड़ा सा पहले पढ़ लें फिर लास्ट में वो कर लें, ठीक है? जरा अटेंड कीजिएगा फुली। आई नीड योर अटेंशन। सो द टाइम passes and the next day, rather at the time of their presence at Bingley House, Bingley's sisters try to humiliate, try to laugh at Elizabeth especially in different ways. But why Bingley sisters do so? I told you yesterday. Yeah, not they, rather one of them is. One is already married, while other is interested in Darcy. Whereas Darcy is interested now in Elizabeth. Now in Elizabeth. Though you cannot call it to be a love. You cannot call it to be love. Because love is still far-fetched from the mood they are in. Anyways, now next day they have to leave. तो जब ये जाने लगते हैं तो डार्सी यकीनन, स्पेशली बिंगले यकीनन सोचता होगा कि तेरे जाने का लम्हा कड़ा वक्त था, सोच गुम हो गई, चांद गहना गया। They have gone. अब in the neighboring village there lives the aunt of Darcy's there lives the aunt of Darcy's sisters, Mrs. Philip. She lives in the neighboring village. तो साथ वाले गांव में इनकी एक आंटी रहती हैं, मिसेस फिलिप, और उसी गांव में the militia has come for the military trainings. Militia क्या होता है? You know what is militia? वो भी है, लेकिन ये मलेशिया है, वो मलेशिया। मलेशिया मीन्स ये जो आर्मी के लोग होते हैं ना, कभी देखा आपने यहां भी ट्रेनिंग के लिए वो आते हैं? नहीं देखा? वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं। ओके, तो अब वो आर्मी के कुछ लोग, बल्कि आर्मी के कुछ दस्ते उस गांव में मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं जहां इनकी आंट रहती है। एंड द बेनेट सिस्टर्स go to see their aunt, but when they find that there are soldiers, and the soldiers are very handsome in their military uniform, they are attracted. One of them is very handsome. He is Mr. Wakeham.
ही इज मिस्टर वेकम। इन फौजियों में एक मिस्टर वेकम है, ये बड़ा हैंडसम है, बड़ा हैंडसम है। अब ये क्या करती हैं, मिलना तो बज़ाहिर अपनी आंटी से था इन्होंने, लेकिन वहां पे ये मिलिट्री सोल्जर्स को देखती हैं जरा फासले से, तो कह सकते हैं कि तेरी गली में तेरी दीद की खातिर जाना, हम किसी और से मिलने के बहाने आए। तो these military soldiers look at them and they look at military soldiers. One of them, Wickham, he happens to approach Elizabeth first. There occurs a conversation between Wickham and Elizabeth. They talk to one another. During the discussion, there comes the talk about Darcy. And Mr. Wickham knows Darcy very well. अब ये मिस्टर विकम जो है, ये डार्सी को जानता है। एलिजाबेथ पहले से ही उसके खिलाफ हुई पड़ी, हाथ धो के उसके पीछे पड़ी हुई है, सिर्फ उन रिमार्क्स की वजह से। यू नो व्हाट द रिमार्क्स आर? क्या है रिमार्क्स? शी इज हैंडसम बट शी इज टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। अब ये रिमार्क्स ही उसके दिल से नहीं जाते। जब डार्सी के बारे में गुफ्तगू होती है तो मिस्टर विकम कहता है कि डार्सी इज नॉट अ जेंटलमैन, ही हैज ऑलवेज एक्टेड अनजेंटलमैनली। वो एलिजाबेथ से कहता है कि इसने, मैं कहता है कि मैं एक क्यूरेट था, मैं एक चर्चमैन था, तो इसके फादर ने मुझे एक घर रहने के लिए दिया हुआ था। इस डार्सी ने मुझसे मेरा घर भी छीन लिया और मुझे नौकरी से भी निकलवा दिया। सो ही इज नॉट अ गुड मैन, ही इज वेरी क्रूअल। अब तो फिर एलिजाबेथ क्या है, पहले ही उसके दिल में डार्सी के लिए बड़ी नेगेटिव फीलिंग्स थी। नाउ द नेगेटिव फीलिंग्स आर ग्रोइंग एंड मशरूमिंग रादर। चलते चलते वन डे मिस्टर William Lucas says that he is intending to see his daughter Charlotte Lucas, and he is going to Charlotte Lucas's house to see her. Maria is also going there. Who is Maria? Charlotte's sister. Elizabeth says, may I join you? May I go along with you to see Charlotte? He says yes. So Elizabeth seeks permission from her mother. The permission is granted and she is also very much ready to go there. Now these three persons go to see Charlotte Lucas. Which three ones they are? Which three ones they are? Sir William Lucas, number 2 Maria Lucas, and number 3 Elizabeth। फिर बताइए कौन कौन जाते हैं जी? यस, अब ये पहुंचते हैं उसके घर। दे रीच शार्लेट्स हाउस। अभी घर नहीं जाते, घर के अतराफ में पहुंचते हैं।
there is a very peaceful environment around the house of Charlotte Lucas. The birds are chirping, the cool shadowy trees are spreading their arms, making shadowy environments. And when they reach there, what a beautiful and magnificent house is that in which Charlotte Lucas is living. And what a beautiful and peaceful environment is that in which she is breathing. For a moment, Elizabeth thinks, oh, if I have committed any fault when I declined his proposal. आपको याद है इसकी पहली प्रपोजल कौन थी? Okay. Now she is for a while thinking that she has committed some mistake. इतना अच्छा घर, इतना अच्छा माहौल, ये तो कम कम लड़कियों को नसीब होता है। आप बताइए क्या, आप बताइए क्या इसने कोई गलती की है एलिज़ाबेथ ने? क्यों नहीं की? तो वल्गर लोग तो ज्यादा काबू में रहते हैं, काबू में तो है ना उसके, है ना? यानी आर यू श्योर कि शी हैज नॉट कमिटेड एनी मिस्टेक? All of the girls are sure? Girls, you are in question. All the girls are in question. What do you think? She has committed any fault? आप किताबों में रहती हैं, या आपका नो किताबी नो है? It is bookish no. It is bookish no. Bookish no समझते हैं क्या होता है? किताबी इनकार. But on practical grounds, the things are quite different. Girls mostly need a good house to live in, a peaceful environment to breathe in. Am I right? Am I right? अब अगर अंडरस्टैंडिंग हो, चलिए आप कहते हैं अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो पैसा पल्ले ना हो, उस अंडरस्टैंडिंग को मिसअंडरस्टैंडिंग में बदलते हुए कितना का वक्त लगता है? 1 मिनट ज्यादा है, 1 सेकंड, और ये कहते हुए आधा सेकंड लगता है कि लिहाजे जेड़ियां मैं तेनू चीजा कहनी है नहीं ते घर साहब लै मैं पेके जानी है। ऐसा ही है ना? और उसको भी 1 सेकंड लगता है कहते हुए, पैर तू गली तो बाहर पाके देखनी, तोड़ दिया लत्ता पेके जाके देखनी। तो फिर बात तू तकरार पे आ जाती है। तू तकरार से आगे बात बढ़ जाती है और फिर वही पेके जाना, वही छोड़ जाना, फिर ये होता है। अब आप बताइए ये अंडरस्टैंडिंग कितने की चल सकती है, आलमे गुर्बत में या यामे गुर्बत में? मैं बेवफा हूं ये सच है, मगर तू इतना बता, मैं अपने पेट का दोजख भरूं कि प्यार करूं? है ना? मैं अपने पेट का दोजख भरूं कि प्यार करूं? मोहब्बतें भी वहीं परवान चढ़ती हैं जहां जरूरतें पूरी होती हैं। वो बड़ा अच्छा है, वो
कि वो है ना, इन्हों को चंगिया ने मिट्टी दियां मूर्तां, सुना हुआ है ना। कहता है हासे विच प्यार दे मोती तोल देंदियां, हासियां दे विच हासियां च गमां दा ए जहर घोल देंदियां, भोले भाले नैना विच लखां ने कदूरतां, इन्हां कोलों चंगियां ने मिट्टी दियां मूरतां, प्यार तो भी प्यारियां ने इन्हां नूं जरूरतां, इन्हां कोलों चंगियां ने मिट्टी दियां मूरतां, है ना। ठीक कहता है वो। बहरहाल एक लम्हे के लिए इसने सोचा कि she must have done something wrong, but right at the next moment she says, no, my decision was absolutely right. Yeah. My decision was absolutely right, right in the sense that I cannot live with a person whom I cannot give my mind, whom I cannot share my, with whom I cannot share my thought. Now they enter the house, the hospitality. The hospitality is very nice. They are entertained with fruits and with other multiple things. So they spend a beautiful time over there. Next day, Lady Catherine comes to see the guests. Who is Lady Catherine? Darcy's aunt. Very good. आपका नाम क्या है? ये तबस्सुम। ये तबस्सुम, ये तकल्लुम तेरी आदत तो नहीं? So Darcy's aunt, Lady Catherine, come to visit the guests. Her daughter is accompanying her. Lady Catherine is a dictatorial, tempered lady. Dictatorial tempered. What does dictatorial mean? डिक्टेटर समझते हैं? डिक्टेटर वो होते हैं लोग जो बड़े, क्या होते हैं डिक्टेटर? आमरियत, अपनी ही हुक्म चलाने वाले। क्लियर? हमारे यहाँ अक्सर पेरेंट्स भी डिक्टेटर होते हैं घरों में, होते हैं ना, होते हैं। तो ये एक डिक्टेटर मदर भी है। ये चीज कैसे शो होती है कि इसकी जो बेटी है, जितनी देर वहां बैठे हैं, इसकी बेटी बहुत कम गुफ्तगू करती है। शी इज साइलेंट इन फ्रंट ऑफ हर मदर। Her mother comes, she comes with some fruits and other things to eat. They are entertained with these fruits and other things to eat. She stays on for 1 or 2 hours and then she leaves. तो कुछ दिन बाद सर विलियम लूकस तो चला जाता है वहां से, मारिया भी साथ चली जाती है, बट एलिजाबेथ स्टिल इज स्टेइंग देयर।
Elizabeth is still staying there. There comes Christmas. In the meanwhile, there comes Christmas. And during the holidays, Christmas holidays, Darcy has planned to visit his aunt. Now, Darcy is to visit his aunt during Christmas holidays, and Elizabeth is already there. Elizabeth is already there. Darcy comes, and when he sees that Elizabeth is there, the joy of his Christmas is doubled. Oh. Darcy is very happy to see Elizabeth during the Christmas holidays. One day, when Elizabeth was sitting in her room, Darcy, all of a sudden, Darcy comes there in her room. You know, Darcy, after all, has the element of pride. He is a bit proud man. You can call him to be a reserved person. उसका ख्याल है कि मैं जिसको प्रपोज कर दूंगा उस लड़की के तो तख्त बख्त सब कुछ समझ जाएंगे ना. उसका ये ख्याल है कि my proposal will be a great gift to every young girl of the world. तो उसका ख्याल किसी हद तक ठीक भी है. An eye-catching personality. One of the richest persons of his area. And every feminine eye is fixed upon his face. Feminine eye क्या होती है? लड़की की आंख. Yes. So he comes in a very proudly manner, enters Elizabeth's room and hands her a letter.